Hello and welcome everyone to Kavish IS. Today we are going to discuss a very important topic which is in Hindu's editorial. The topic says the geopolitics of satellite net. सैटेलाइट नेट के बारे में हमारे एडिटोरियल का एक टॉपिक आया था which is focusing on partnership पे फोकस कर रहा है किसका SpaceX का Starlink and the partnership between Digital Geo. इस पार्टनरशिप के ऊपर में फोकस है इस सैटेलाइट नेट का इससे this partnership is actually going to benefit India's internet access. For suppose it is very evident that internet access in some remote areas जैसे for suppose we say any dense forest area or strategical area, example Kashmir, Jammu Kashmir, Ladakh, India concerns like Arunachal Pradesh. इन सब जगहों पे इंटरनेट एक्सेस का होना, फास्ट इंटरनेट एक्सेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अर्बन एरियाज पे हमारे जो सिटीज हैं, विलेजेस, अर्बन एरियाज पे वी हैव गुड कैपेसिटी. अर्बन एरियाज पे वी आर वेरी गुड. फॉर सपोज वी आर नाउ करेंटली एट कोलकाता एंड कोलकाता पे जियो का ट्रू 5G है, एयरटेल का 5G है, ट्रू 5G गिविंग अनलिमिटेड डेटा टू इट्स कंज्यूमर्स. बट वेयर एज सिग्निफिकेंट एरियाज जहाँ पे 4G नेटवर्क है या कोई जगह पे 4G भी नहीं अवेलेबल है, उस जगह पे प्रॉपर इंटरनेट सर्विसेज का काम कौन करेगा? ये पार्टनरशिप करेगा. इससे क्या होगा? दिस विल फर्दर एनहांस क्या इंडिया's digital expansion. More and more areas will come under the purview of what? Internet. More and more people will come under the purview of internet. Further, this partnership will also facilitate what? Technological knowledge transfer. करेगा. Whom the American companies will give to the Indian companies. Boost the digital infrastructure. It will further boost the digital infrastructure. But with these benefits also comes the challenges of what? Data control, digital sovereignty, and the lack of framework. एक फ्रेमवर्क भी लैक कर रहा है. कैसे होता है, क्या होता है, इनके बेनिफिट्स क्या है, इनके इश्यूज क्या है, we will discuss all through the coming. Now, it has some further implications. What are those implications? अगर पहला देखा जाए
तो जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है कुछ जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है। कुछ जियो पॉलिटिकल क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है? इंडिया करेंटली इंडिया वांट्स टू अवॉइड होम, इंडिया वांट्स टू अवॉइड चाइना का से कोई भी ऐसा चीज हम नहीं करना चाहते जिससे हमारा उनके साथ में डेटा शेयरिंग हो, उनका चाइना के पास में इंडिया का डेटा आ जाए, डेटा कंट्रोल आ जाए। इसी के लिए हमने क्या किया, कई सारे ऐप्स को भी ब्लॉक किया हुआ है। सो फर्दर इंडियाज इंटरेस्ट अलाइंस विद whom द वेस्ट के साथ अलाइन करता है, जो कि क्या है, एक यूएस लेड अलायंस हो रहा है, एक यूएस लेड अलायंस बन रहा है टू काउंटर द चाइना, एंड दिस विल फर्दर गिव एन एज टू इंडिया इन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। इंडिया का इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो है विच इज लेड बाय यूएस एंड द वेस्ट ditching China. This will further give a goal to India's Indo-Pacific strategy. Further, SpaceX का जो Starlink है, this actually operates where? This operates in LEO. What is LEO? LEO are low Earth orbit पे। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है? इट has a very short distance, very short distance किससे? अर्थ से, very short distance from अर्थ। जैसे if you have to अगर कोई लियो ऑब्जेक्ट है, if a satellite is placed in LEO, it will complete one rotation approximately 90 minutes में complete कर लेता है। और क्या होता है, due to this shorter distance from Earth, they enable what? Lower latency का मतलब क्या हो जा रहा है? It will have less delay in receiving and then thereby transmission of data. Transmission of data is what? Is faster. डेटा का जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा? फास्टर होगा। क्यों फास्टर होगा? क्योंकि वो एक ऑर्बिट 90 मिनट्स में कर ले रहा है। शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल करने के चक्कर में क्या है? लोअर लेटेंसी है। मतलब क्या है? जो सिग्नल का आना जाना है उसका जो डिले होता है, बफरिंग पार्ट जिसको बोलते हैं, वो कम है, जिससे क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज फास्टर। लियो ऑर्बिट में स्टारलिंक का ऑलमोस्ट 7000 प्लस सैटेलाइट्स है। फर्दर गिविंग व्हाट? मोर डोमिनेंस ऑफ किसका? फर्दर गिविंग व्हाट? मोर डोमिनेंस ऑफ यूएस। फर्दर व्हाट? गिविंग मोर डोमिनेंस टू क्या? यूएस को और ज्यादा डोमिनेंस दे देगी। जब डोमिनेंस यूएस का ज्यादा हो ही जाएगा तो क्या हो जाएगा? इट विल फर्दर प्राइस कंट्रोल नहीं होगा, मोनोपोली होगा, मोर डेटा किसके पास रहेगा? यूएस के हाथ में रहेगा। Further, this will change the geopolitical dynamics. पूरे के पूरे geopolitical dynamics को क्या कर देगा? चेंज कर देगा, क्योंकि डेटा सब किसके पास में हो जाएगा? सब के सब यूएस के पास में चला जाएगा स्टारलिंक के सर्वर से। फर्दर कुछ इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन से क्या होगा? इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है। पर इसमें क्या होगा? अब ये जो पार्टनरशिप हुआ है, दिस विल गिव व्हाट?
this will give India faster internet access. Faster internet access बनेगा, and this will create a good competition. But at the same time, Starlink will have what? Starlink will have what? More access to Indian market. Indian market पे उसके पास क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा एक्सेस मिल जाएगा. Further what? Further this partnership, ये जो Starlink का जब एंट्री हो जाएगा, further this will somewhere I can say it will destabilize the domestic market. अभी सबको को फास्ट इंटरनेट चाहिए, स्पीड सबको ज्यादा चाहिए, पैसा थोड़ा बहुत ज्यादा होने से भी होगा. और जो अभी है जिसका भी थोड़ा बहुत है कि प्राइसिंग में कुछ 300 रुपीज का ही ज्यादा फर्क होगा. स्टार्लिंक मिला 200-300 price more than what Jio and Airtel are offering. People will automatically jump into what this further giving what फिर वही data control की बात आ जाएगी है, and this will worsen the digital sovereignty. अब ये डिजिटल सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस डिजिटल सॉवरेनिटी? तब से हम बात किए जा रहे हैं from past 10 minutes we are discussing this digital data control, digital sovereignty. What is this digital sovereignty? Digital sovereignty आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है. डिजिटल सॉवरेनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है. डिजिटल सॉवरेनिटी का मतलब क्या हो जा रहा है कि ensuring कंट्री, लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूं इंडिया, कंट्रोल ओवर इट्स ओन डेटा, कंट्रोल करना है अपना खुद का डेटा rather than sharing or relying on foreign resources. अपना खुद का डेटा, ये तो क्या है, इससे क्या होगा? फर्दर दिस will do what? This will enhance digital But this will do what? This will enhance our digital infrastructure. Digital sovereignty का मतलब ये है, एक कंट्री, let's suppose मैं इंडिया बोल रहा हूँ, इंडिया will have its full control over its own data. ना ही उसको किसी पे कुछ शेयर करना पड़ेगा, ना ही किसी और फॉरेन सोर्सेस से रिलाई करना पड़ेगा कि भैया मेरा डेटा मेरे को दे दो. Further ensuring what? This will enhance a good digital infrastructure for India. And this digital infrastructure जो खुद का कंट्रोल बने, डाइल्यूट नहीं होना, अपना डेटा को डाइल्यूट नहीं करा के उस पर खुद के कंट्रोल रखने का बेस्ट एग्जांपल कौन प्रूव करके दिया है? चाइना. चाइना's gold mine. ये क्या है? ये उनका खुद का स्टेट कंट्रोल है, स्टेट कंट्रोल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका. बट our partnership with Starlink will do what? Our partnership with Starlink will do what? It will give data access. Data access किसको दे देगा? Starlink के पास रहेगा. And further, this giving data access to Starlink will have undue US influence. एक undue US का इन्फ्लुएंस भी होगा. फर्दर एक और चीज भी एविडेंट थी ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर. इट gave restricted internet access. It has the control over restricted internet access. और इंडिया के साथ अभी ये पॉसिबल सिनेरियो आ सकता है. लेट्स सपोज इन केस ऑफ JNK और लद्दाख, एज डिस्कस, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, इन केस ऑफ वॉर they may or may not
give internet access to their. So ये भी कुछ implication हो सकती है हमारे लिए भी. एक और out of the aspect is that there was this absence किसका था? BSNL का था. भारतीय संचार निगम लिमिटेड, a fully state owned and controlled entity. State owned and controlled entity था. अगर BSNL भी इसमें हुआ होता, then what? That has ensured, it would have ensured greater government control, greater government control in government का it would have ensured greater government का control होता, more and more क्या होता, it would be transparent होता, the framework would be there, transparency in what? Transparency होता किस पे? data control and sharing, data control and sharing पे भी होता. At the same time, an opportunity for BSNL to enhance its internet capabilities. So it had been dual role होता. अगर स्टारलिंक इस पार्टनरशिप पे BSNL भी होते जो कि फुली स्टेट कंट्रोल है, तो डेटा कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी का भी दिक्कत नहीं होता, क्योंकि पूरा गवर्नमेंट का वहाँ पे डेटा इंटरवेंशन का गवर्नमेंट कंट्रोल करती चीजों को कि क्या है, कितना डेटा शेयरिंग है, आप इंटरनेट एक्सेस दोगे कि नहीं दोगे, रेस्ट्रिक्शंस करोगे तो क्या बेसिस दोगे रेस्ट्रिक्शंस का. एंड एट द सेम टाइम उस पार्टनरशिप से क्या होता, स्टारलिंक के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से और मैं क्या बोल सकता पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल से इन BSNL के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था अपने इंटरनेट कैपेबिलिटीज को, अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारने का. Although this partnership may give us the internet access देगा, it will serve as a backup communication, greater technology know-how share होगा, faster internet access speed होगा, every inch of area will be covered under internet. But at the same time, the issue of digital data control, digital infrastructure, authority of it, who will control, US influence, this poses as other challenges for implementation of this partnership. क्या क्या challenges होगा? First मैं बोलूँगा monopolistic view है, monopolistic and price control. No one is near Starlink with more than 7,000 plus satellites in where in the Leo Earth orbit. मोनोपोली होगा, प्राइस कंट्रोल के ऊपर बात आएगा, एक्सेस पे बात आ जाएगा. दूसरा issue of space congestion and increased chances of space debris. स्पेस डेब्रिस के हमने बारे में डिस्कस किया है. 2008 में इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट्री भी रेटिफाई किया था कि विल स्पेस डेब्रिस पे काम करेंगे बोल के. फर्दर मिशन शक्ति भी है स्पेस अवेयरनेस के बारे में, मिशन शक्ति इन 2019. बट जितना ज्यादा हम सैटेलाइट लॉन्च करते जाएंगे उतना रिस्क है स्पेस डेब्रिस किस करने का. लैक ऑफ फ्रेमवर्क है, कोई प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है ओवर डेटा ब्रीच हो सकता है, डेटा लीक्स हो सकते हैं, एंड देन हु विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल. तो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लाके खुद के डिजिटल को बना के मोर एंड मोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ व्हाट इसरो के साथ क्या अपना ही खुद का ओन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं for our own betterment. So from this above discussion, I conclude my topic of
the outer space is, that is the satellite internet partnership. Thank you.